Hello everyone, so this is my new video. Like I mentioned in my previous video that I'm from Shimla, and these days we have come home because the apple harvest season is on. I'm very proud to say that we have a very beautiful apple orchard here, and I will show you further how we plan the day at a farmhouse. So what we do is we come to the orchard and sit under the apple tree. We get our tea along with us and the book to read, and we spend the whole day sitting under the apple tree. Before it gets cold, we should have our tea first. And if you know me, you should know that I'm a tea lover. It's so beautiful, I can't tell you. Having a ginger tea, I can sit here and spend my whole day. It's beautiful, it's very peaceful. I can only hear my dad yelling at people. I guess they are not working or something. So guys, please ignore the background. But still, it's beautiful, trust me. So we have this beautiful angel living here, and her family takes care of our farmhouse. एक बात बोलनी है, इधर आओ जल्दी. यहाँ बैठो. यहाँ बैठो. दिया मैंने कुछ पूछा. Look at her, she's removing her slippers. क्या किया? सेब तोड़े? सेब तोड़े? हाथ गंदे हैं. आंखें मत मलो. सेब तोड़े? कितने सेब तोड़े? She's just 4 years old, and they've been living with us from almost last, I guess 3 years. रिया, सेब खाएगी? खाएगी? तूने इतने सारे सेब तोड़े कहाँ पे? हम खाएंगे सेब. So we have this also with us. नहीं वो वाला नहीं, हम फ्रेश यहाँ से तोड़ेंगे. ये वाला तोड़े दिया? ये वाला तोड़े. ये नहीं. कौन सा अच्छा है? ये वाला तोड़ू? ओके, तोड़ दिया. ये सेब खाएगी हमारे साथ. So I'm sure you can hear that how crunchy and see how juicy these apples are. So this is how we cut apples here. We pluck and we eat. So look at how. दी आपको भूख लगी है? भूख लगी है? भूख लगी है? So cute. हाँ, खाना नहीं खाया? नहीं खाया? क्या खाया? कुछ ना खाया? क्यों नहीं खाया? क्यों नहीं खाया? ये ले. थैंक यू बोलना है, ठीक है? पहले लो, आप बोलो थैंक यू. You're welcome. आप बताओ कौन सा एप्पल तोड़े? कौन सा वाला तोड़े? कौन सा वाला? एक मिनट, पहले हम ये काट लेते हैं. अब बताओ कौन सा एप्पल तोड़ना? ये नहीं, ये वाला नहीं तोड़ना. दूसरा अच्छा सा कोई. कौन सा? लाल लाल. लाल लाल तो सारे हैं. लाल लाल. ये वाला तोड़ू? हाँ? रिया ये तोड़ू? टूट गया. टूट गया. लो निकाल खाओ. रिया एरोप्लेन जा रहा है. रिया एरोप्लेन. एरोप्लेन कहाँ है? एरोप्लेन कहाँ है? बाय बोलो, बाय बोलो. बाय जोर से. बाय जोर से बोलो. बाय एरोप्लेन को. बाय. अरे चला गया? चले. आप चलोगे मेरे साथ इसमें? चलोगे? मेरे साथ मेरे घर चलोगे? मेरे घर बैंगलोर चलोगे? So yes, this
We do. And let me take you around the orchard and show you how is it. Before we go, there are these apples which we didn't pluck, but it has fallen from the tree. And follow me. My shoes are there, so don't judge me for my shoes. We have to wear these shoes here. So my favorite apple, what I like, is these yellow ones. Can you see that? I find them very tasty. I don't like these red. So this is called golden apple. Apple, because the harvest season is almost over, and I think today is the last day, and that's how we decided that we should make one video during our harvest season. So it's getting over. That's why very few are there, because the color and the size was not good how it used to be, because it didn't rain for 2-3 months. See here. So now I'm going to show you how to pluck the apples. There's a trick and the art of plucking the apples. So, come. कैसे करना है? तेजा तोड़ना है ना? ऐसे. अब ये तो सारे ही टूट गए तो? ओके. ऐसे? कैसे हम वहाँ पे? No, I don't know how to do it. So he's my darling Chachu, and he's gonna tell you how we do the whole process. We also have a machine and few labels here. Takes care of the packing and the size, bread, and in which box. So come along and Chachu will tell you. Chachu बताओ कैसे? पहले क्या होता है? पहले वो सेब तोड़ के लाई सेब तोड़ के लाइए इसमें ग्रेड में ग्रेट. ओके यहाँ स्टैक करेंगे ठीक है ये ग्रेड स्टैक हो जाती है यहाँ से अच्छा फिर यहाँ से जो ये हो जाती है ना क्या नाम सेब आता है यहाँ से ग्रेड हो जाता है मशीन पे यहाँ ग्रेडिंग होती है. ग्रेडिंग होती है फिर अभी यहाँ से ग्रेड कर रहे हैं ये मशीन में जा रहा है तो यहाँ से फिर वॉशिंग हो जाएगी आगे अच्छा यहाँ से आती है ये देखिए अभी जिला हो से फ्रेंच वन होता है फ्रेंच वन अभी और अच्छा जब जिला होगा फिर फ्रेंच ला के फिर सूख जाता है ये शुरू करके आ जाता है साफ हो ठीक है यहाँ पे आ जाता है वहाँ पे सूखता है सूखता से इधर आ जाता है यहाँ से फिर ये ब्रशिंग हो रही है साफ हो रहा है ठीक है वॉशिंग हो रही है बिल्कुल साफ होके सेब आ जाएगा ये ब्रश है ये 20 ब्रश साफ की है ये शाइनिंग देता है ये फिर मशीन में चली जाती है
तो यहाँ पे ग्रेडिंग हो रही है। ग्रेडिंग हो रही है, ये जमा यहाँ ग्रेडिंग, ये अपने आप और इसमें आ जाता है, ये आता है 7 लेयर, ये बॉक्स है 7 लेयर, सबसे छोटा सेब है। सबसे छोटा सेब। अच्छा 7 लेयर, फिर 6 लेयर आ जाएगा। 7 लेयर मतलब ये वाली 7 लेयर लगेगी। 7 लेयर लगेगी। तो जो सेब यहाँ आएगा वो 7 लेयर का जाएगा। 7 लेयर का जाएगा। अब अपने हिसाब से इसमें पैकिंग करती है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है इसकी। ये हमने किया है? हाँ, हमने अच्छा एडजस्टमेंट की है। ये है 7 लेयर की। अच्छा 7 लेयर का बॉक्स आ गया। हाँ। ये 6 लेयर का आ गया। हाँ। ये 240 का आ गया। 240 मतलब 240 सेब है। एक्स्ट्रा स्मॉल, हाँ एक्स्ट्रा स्मॉल है ना। ये स्मॉल आ गया, हाँ। स्मॉल 175, 175 हाँ 150, 150 हाँ 175 ये आ गया, 175 150 हाँ 125 ये आ गया, मीडियम अच्छा लार्ज ये आ गया। अच्छा 100 ये 125 और ये एक्स्ट्रा लार्ज। यहाँ से छांछ टाइप करके फिर ठेले में जाता है। अच्छा जो आएगा ये देख 7 लेयर का ये लगा हुआ है, ये 7 लेयर 7 लेयर और 6 लेयर इकट्ठा किया हुआ है। अच्छा एक ही पेटी में भरेंगे इसको, अच्छा एक, फिर ये 240 आ गया, अच्छा ठीक है, ये आ गया 240 175 आ गया, अच्छा 175। हाँ तो ये सबसे अच्छा सेब है। ये सबसे अच्छा सेब तो लार्ज मीडियम स्मॉल का सेब सारा अच्छा है, हाँ साइज छोटा है इसमें। अच्छा हाँ सेब सारा अच्छा है। तो फिर इसमें इसको डाल के फिर पैकिंग में अच्छा फिर अब इसके बाद पैकिंग हो जाएगी, पैकिंग करने बैठेंगे, पैकिंग हो जाएगी, पैकिंग करके फिर स्टैक होगी, फिर पेटी में पेटियाँ बंद होगी, हाँ। फिर इसको इसकी पैकिंग करेंगे स्टैक करके, हाँ फिर लेबर ये करेंगे, कैरेज करेंगे। तो मार्केट में चला ये 7 लेयर का है। ये 7 लेयर का हाँ है। ये देखो इसमें ये पड़ा हुआ है, ये 1 2 3 4 5 6 पंजे 30, 5 ट्रे लगेगी इसमें, अच्छा। 150 ये हो गया 150 तो इसका 150 स्मॉल आएगा ये। अच्छा ये 7 का है, ये 6 का है। इसे लगा नहीं, हाँ 6 ये का है। स्मॉल का, हाँ मतलब वो 6 हाँ और ये 5 का है। ये 5 का। एक अच्छा जब बॉक्स भर जाता है हाँ फिर ये मशीन होती है पैकिंग के लिए, हाँ। ये पैक करते हैं, फिर इस मशीन से पैक करते हैं। तो वो कब करेंगे? ये बाद में करेंगे जब भरेंगे ना इसको, हाँ तो उससे वो सील होता है। इससे सेल कर देते हैं। ये 7 लेयर भरा जा रहा है, 7 लेयर भरी जाती है 7 लेयर की। 7 लेयर आती है इसमें। चलिए, ये बेसिक चाहिए, ठीक है, ये भी बेसिक चाहिए, ये बेसिक चाहिए। नाइस चाहिए, ये 7 लेयर भरा हुआ है। ओके इस तरह पैकिंग होती है, फिर स्टैपिंग होगी इसके बाद। समझ गए। Thank you for watching our video. Please do like, ऐसे and subscribe our channel. गिरा दिया मुझे. Okay, ciao.